परमात्मा सावण कृपाल दे चरनां विच नमस्कार है। जिन्हां ने साडे जीवां ते बड़ी भारी दया करके आप दा शांति दा देश छड्डिया, सुखां दा देश छड्डिया और साडियां आत्मा ते रहम करन दी खातर उस परमात्मा दी तरफों भेजिया होया ये दुखां दी नगरी च बीमारियां और परेशानियां दी नगरी दे विच वो आया और सानू आप दे घर दा जिथों वो आया सी उथों दा निमंत्रण दिता, दस्या कि तुहाडा घर किन्ना रोशन है, किन्ना उत्थे कीर्तन है और किन्नी उत्थे शांति है। वो सानू उन्होंने प्रकाश भी दिखाया, वो कीर्तन भी सुनाया। हुण साडा फर्ज है कि उस प्रकाश नू, उस कीर्तन नू, उस आवाज़ नू अगे वधाइए, क्योंकि कुछ शिष्य दियां भी जिम्मेवारियां हुंदियां हन ਜਿਹੜੀਆਂ कि उस नू अवश्य निभाउणियां पैंदियां हन। तो गुरु अपनी ड्यूटी तो कदे भी अवेसला नहीं हुंदा, लापरवाह नहीं हुंदा। उहने जो वायदा कीता हुंदा है आत्मा दे नाल, उस ते ओह जद दी दुनिया बनी है खरा उतरदा आया है। Salutations unto the feet of Lord Almighty Savan and Kripal, who have showered tremendous amount of grace on we the suffering souls, on these jivas, in order to shower grace upon us, in order to have mercy on us. They left their home, which is full of peace and happiness, where there is all light, and they came into this world which is full of suffering. They gave up all their comforts and conveniences. They came in this world which is full of suffering, and they assumed the body which is full of dirt and which is subjected to all kind of pains and afflictions, only to show us that how much grace, how much light, how much Shabad and Kirtan is there in our real home. Not only they told us about it, but they also showered so much grace upon us, and graciously they showed us that what is there in our eternal home. They made us do the devotion of the Shabad. They made us hear the Kirtan. So like they have showered so much grace upon us, now it becomes our responsibility to progress on the path which they have put us upon. The capital which they have given to us, we have to increase that. The capital of the Naam which they have so graciously given to us. The disciples have certain responsibilities, just like the masters have. Masters, after giving us the initiation, after putting us on the path, they never become lazy. Ever since this creation has been created, and ever since the masters have been coming into this world, and whenever they have come and they have given the initiation and have connected the souls with the light inside, after that they do not become careless. They always perform their duties. But we, the disciples, also have certain responsibilities to attend, and if we were to attend to our responsibilities, if we were to do our duty, then we will see that the master is even ready before we get there to shower his grace upon us. गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि मैं अपने पूर्वले जन्म के अंदर बड़ी भारी तपस्या की, एक तो दो तो एक रूप हो गया। मैं परमात्मा विच मिल गया सीगा, लेकिन परमात्मा ने फिर हुक्म दिता कि बई तू संसार विच जा, ये मेरा कार्य करना है। वो की है कि मेरे नाल जीवां नूं जोड़ना है। मैं बहुत सारे ऋषि मुनि भेजे हैं, उन्होंने आपो अपने पंथ चला ले, रस्ते चला ले है और रब दे शरीक बन के बैठ गए है। तू जाके मेरे नाल जोड़,
तो गुरु गोबिंद सिंह कहन लगे मैं उस परमात्मा का हुक्म मोड़ ना सकिया, फिर भी मेरी जिहड़ी सुरत सी आत्मा सी उन्हां दे चरनां विच बुझी रही, जड़ी रही, चुभी रही। तो आप कहन लगे मैनू उन्होंने अपना पुत्र बना के संसार विच भेजिया, क्योंकि मैं बेनती की कि जिस संसार दे विच मैं मेरी तई रखिया करनी है, तू ही सिर ते हाथ रखना है। तो परमात्मा की तरफों परमात्मा कहन लगे मैं अपना सुत तुझे नवाजा, मैं तेनों अपना पुत बनाया है, मैं पिता की तरह तेरियां सारियां जरूरतां जिहड़ियां हन वो पूरियां करूँगा। Guru Gobind Singh Ji says that in my previous birth I had performed many austerities, and from two I had become one. I mingled in God Almighty and I became one with Him. But then He ordered me to come back to this world. He told me to come to this world. He said that now you have to go back to the world and you have to do the work. What kind of work? The work of connecting the souls with me. Because God Almighty said that because I had sent many rishis and munis to awaken the souls and to connect them with me, but when they came in this world, they started their own paths, they started their own practices, and they started making the people worship them. They became the equals to me, and they have taken the people away from the true path. So now you should return to the world, you should go back to this world, and you should do this work of connecting the souls with me. So Guru Gobind Singh Ji said that at that time I made this prayer to beloved Lord. I said that I don't want to go, but since it was the order of my beloved Lord, I had to come. But still his attention, as Guru Gobind Singh Ji says, that my attention was absorbed in the feet of God Almighty. My attention was always there. I was still mingling. I was one with God Almighty. And I made this prayer to God Almighty that, oh Lord, now when you are telling me to go away from you in this world, you will have to take care of me, you will have to protect me. So God Almighty replied that I have made you my son, and just like a father takes care of his son and he is responsible for him, in the same way I will be responsible for you, and you will be provided with everything you need. I will take every possible care of you. गुरु गोबिंद सिंह कहने लगे मैं हाथ जोड़ के नमस्कार की, ठाड़ प्यो मैं जोड़ कर बचन कहो सिर न्याय, पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय। पंथ नाम संप्रदा दा भी है, पंथ नाम रस्ते दा है कि मेरा रास्ता जो शब्द नाम दा है, तेरी बगैर मदद तो चलना नहीं। Guru Gobind Singh Ji says that at that time, folding both my hands, I made this prayer. I requested to God Almighty that here I am standing in front of you with my both hands folded, and I am telling you that the path will continue, or the panth will continue, which also means the path. The panth will continue only if you will be helpful. Panth can also literally mean a religion, but here it means the path of the Shabad Naam. गुरु गोबिंद सिंह ने कहा मैंने जो परमात्मा का हुक्म सीगा मैं उही संसार विच कीता, मेरा किसी नाल दुश्मनी नहीं, सब आत्मा नाल प्यार है। तो आप कहने लगे मैं हूँ परम पुरख का दासा, देखण आयो जग तमाशा, सब संत तमाशे की तरह इस संसार नूं देखते हैं। Guru Gobind Singh said that I have come in this world, I came in this world in the will of Lord, and whatever I have done that in accordance with the will of Lord Almighty. I do not have any enmity towards anyone. I am the servant of the Supreme Being, and I have come into this world to see the play of this creation. All the saints, they see this world as like the play of the Creator. ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੇ ਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ
ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲਿਆ। What is our condition? Whenever we have to encounter any pain. Whenever any pain comes to us, we cry. Whenever any happiness comes to us, we become so happy that our joy knows no bound. But whenever we are made to suffer, whenever we suffer, we always cry. But what is the condition of the great masters? Just imagine the condition of Guru Gobind Singh. Just imagine that if someone's 4 sons are killed, what he would feel. But still he took it like the play of the Creator. All the saints have taken whatever happens to them as nothing but the play of the Creator. ਆਪਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਖੇਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। We go to see the play, and over there we know that all the artists, all the actors are playing their role, are playing their part, and that doesn't affect us that much because we know that it is nothing but a play. In the same way, when our soul rises above the tamogun, satogun, and rajogun, and finally when the masters take our soul up in the inner planes, the souls who do the meditation and those who go through all the planes, they also see all the things which are happening in this world as nothing but the play. तो परमात्मा कृपाल ਬਈ ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। So God Kripal also came from the same home and he also took this world as a play. ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਚਾਏਗਾ। Since many days I have been explaining to you the responsibilities, the duties which he has given to us to do. I have told you that if we will not follow the path which our master has shown to us, and if we will follow the path of the mind, he will make us dance to his tune, just like a puppeteer makes the puppet dance to his tune. ਜਦ ਕਿਤੇ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਛਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਉਹ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਤੀ ਝਾੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Whenever there is a program like this of 8 days where the Westerners also come, the dear ones meditate, and when they tell me about their good experiences, I become very happy and I say to myself that it's good that at least the dear ones have taken advantage of this program and they have progressed in the meditation. In the same way, the Indian dear ones also, many of them, when they come to see me, they tell me about the progress they have made in the meditation during this program. Not everyone who comes here goes back from this program just like that shopkeeper who used to go away from the satsang without accepting anything from it. There are many dear ones here who come and who meditate and they tell me about their progress. परमात्मा ने अपार दया करके साड़ी आत्मा ते रहम करने वास्ते उस कृपाल नूं भेजिया। उसने आपदे नाम दी महानता सानू आके दसी।
Showering limitless grace upon us, God Almighty sent Kirpal in order to have mercy on our soul. And Kirpal, after coming, showed us the greatness and importance of his name. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਵੀ ਤਰੈ. Guru Nanak Sahib had said that if Sant Kirpal, which means that gracious saint, showers the grace, Nanak says that even with the sinner, even with the good ones, the critics and the sinners get the liberation. ਤੋ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਹੈ. ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇਗੇ. ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਲਡਾਏ ਕਿ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆਓਗੇ. We do not know anything about our previous births, that how much criticism we have done, and how much indulgences, how much indulgent we were. But at least we know about this birth, and we have done so much bad deeds, we have done so many criticism and so many indulgences, that just considering what bad things we have done in this life, we can say that we are not worthy of his grace, we are not worthy of receiving the initiation from him, and we are not worthy of receiving his grace and mercy. But still, in order to prove the significance of his name, Kirpal means the gracious one. When he came, he showered so much grace upon us, and how he showered grace upon us, we the ones who are critics, we the ones who are the indulgent ones, we backbite and we do all sort of bad deeds, but still how much grace he showered upon us. He went to people's homes, he went to so many different places, and he himself called us to his feet and he showered his grace upon us. Just like a father caresses and loves his son, sometimes giving the sweet, sometimes giving something else, sometimes giving this thing or that thing. In the same way, our beloved Lord Kirpal, like a father, gave us so many different things, showered so much grace upon us, and he brought us to his feet. ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਲੰਗੜੇ ਸੀ, ਪਿੰਗਲੇ ਸੀ. ਸਤਸੰਗ, ਸੱਚਖੰਡ ਅਸੀਂ ਅੱਪੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਸੁਭਾ ਭਜਨ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸੀ, ਹਰੀ ਭਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਕਰ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿਓ ਹੀ ਨਾ. ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅੰਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅੰਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ. ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ. ਅਗਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਪਲੇ ਡੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁੱਧੀ
पैदा हो जाती है, जिन्हों संत महात्मा विवेक बुद्धि कहते हैं। विवेक का मतलब है सच और झूठ का निर्णय करना। सो इस वास्ते सानू भी हुण चाहिदा है कि उन्हां दे उपदेश ते चल के अपने जीवन नूं सुधारीए। मैनूं बड़ी खुशी होई तुहाडे विच 8 दिन अभ्यास करके और थानू अपने गुरु का संदेश सुना के जो कुछ उन्होंने इस गरीब आत्मा के जुम्मे लाया है। मैं आशा करता है तुसी अपने घरां दे कारोबार करते हुए अपने देश के अंदर जाके सारे ही इस संदेश का पालन करोगे। परमात्मा कृपाल जो कुछ बख्श गए है प्यार आपदा उसनूं भजन सिमरन करके ही बनाई रखोगे। Spiritually, we were the blind ones and He gave us the eyes. Spiritually, we were the crippled ones and He gave us the legs. This morning at the meditation, I had said that God Almighty is very big. He is very large, like a big mountain. But He is hidden behind a very thin veil of our egoism and our mind. And if we were to know and if we were able to remove that thin veil of mind and the egoism, then we could easily get to see our beloved Lord and we can easily climb over Him, we can easily achieve Him. But we do not have the legs, we are the crippled ones. God Almighty came in the form of our Master and He gave us those eyes through which we could see Him, and He gave us those legs through which we can climb that mountain and reach our eternal home. For the last 8 days, I had been telling you the message of beloved Lord Kirpal, and it was very good time. I was able to meditate with all of you, and it was a very pleasant moment for me that I was able to share His love with you. I hope that now when you will go back to your homes, you will be able to maintain whatever you have received here. I would like to remind you the message which our beloved Lord used to give, and that is that you should not eat the food until you have fed your soul. Because you know that as it is important for our body to have the food in the same way, or even more, our soul needs the food. This is only because of the lack of self-confidence. This is only because of the lack of strength of our soul that we easily get perturbed and we easily get confused. So that is why Master Kirpal used to say that meditation is the food of our soul, and every day before you feed your body, you should feed your soul. You know that if you do not feed our body, we say that we won't survive. In the same way, you should understand that it is equally important for our soul also to have the food. We should be very grateful to our beloved Lord who came into this world, and He gave us the eyes to see Him. He gave us the legs through which we could climb that big mountain, and also He gave us that water through which our soul can remain alive. So I hope that whatever you have received here, you will maintain it, and you can maintain that only by doing your bhajan and simran regularly after you return to your home. Shabad na bolna. Shabad na bolna. सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नीसैयो दीन दयाल नीसैयो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नीसैयो दीन दयाल नीसैयो कई जन्मां तो विछड़ी सी मैं लभदी प्रीतम प्यारा सतगुरु पूरा मिल जाए मैनू हो जाए पार उतारा कई जन्मां तो विछड़ी सी मैं लभदी प्रीतम प्यारा सतगुरु पूरा मिल जाए मैनू हो जाए पार उतारा नी मिल गया माही मेरा निशहन शाही मेरा नी मिल गया माही मेरा निशहन शाही मेरा करे संभाल नी सहियो दीन
दयाल नी सहियो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सहियो नी मैं दर दर फिर के डाडी पागल होई दिल दा जानी कोई न मिलया ना सुनी अरजोई सहियो नी मैं दर दर फिर के डाडी पागल होई दिल दा जानी कोई न मिलया ना सुनी अरजो नी मिल गया प्यारा मेरा नी दिली सहारा मेरा नी मिल गया प्यारा मेरा नी दिली सहारा मेरा शब्द भंडार नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नी सहियो दीन दयाल नी सहियो जल तारे और तूने तप दे था तीरथ नाया शिव द्वाले ते मंदिर पूजे किसे न दुख वंडाया जल तारे और तूने तप देता तीरथ नाया शिव द्वाले ते मंदिर पूजे किसे न दुख वंडाया नी मेरा माही आया नी मैनू रस्ते पाया नी मेरा माही आया नी मैनू रस्ते पाया दवे दीदार नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सोना दर्श दिखाओ सबनू सुन कृपाल प्यारे ऐ बाबरी अजैब दी जिंदड़ी लावो पार किनारे सोना दर्श दिखाओ सबनू सुन कृपाल प्यारे ऐ बाबरी अजैब दी जिंदड़ी लावो पार किनार नी सच्चा संत आया नी मेरा कंत आया नी सच्चा संत आया नी मेरा कंत आया करे प्यार नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नी सहियो दीन दयाल नी सहियो सतगुरु सोना मेरा है कृपाल नी सहियो दीन दयाल नी सहियो. Now all of you should one by one come and take the prasad and then return to the place where you are sitting. Okay, we are asked to sing one more bhajan. Jhuti duniya. झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा को
बंधन तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा, कोई आके बंधन तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। पट के दुनिया विच रू मेरी, पट के दुनिया विच रू मेरी, मिलिया ना कोई दर्दी। फसी फसाई दुनिया दे विच, दुनिया है बेदर्दी। भुल के रस्ता औजड़ पै गई, भुल के रस्ता औजड़ पै गई। रस्ते वल मुँह मोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा, कोई आके बंधन तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। मैं मूरख पापण हत्यारी, मैं मूरख पापण हत्यारी। ऐबां दे विच अड़ गई, याद प्रभु दी भुल गई। मैं हेठ पापां दे दड़ गई। तरस मेरे ते कीता आके, तरस मेरे ते कीता आके। काल दे संगल तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा, कोई आके बंधन तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। मैं अनजान ना कुछ भी जाना, मैं अनजान ना कुछ भी जाना। मैं तके कांदी फिरदी, मिल जाए किरपाल दयालु, तांग दिलां विच चिरदी। रूह अजाइब दी कर तो भुल गई, रूह अजाइब दी कर तो भुल गई। फड़ के घर नू मोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। झूठी दुनिया च फसिया दिल मेरा, कोई आके बंधन तोड़ गया। लख वारी ओ जी सदके जेड़ा सुरत शब्द नू जोड़ गया। Okay, now the prasad time.
all those who have to leave, please leave, and the other dear ones sit in the meditation. All of you, please close your eyes and start meditating.
Okay, this is a story about a master who once, in his travels, met a snake. And the snake was a cobra who had terrified a village. And he was so fierce and deadly that they were all afraid of him. And no one ever dared go near him. And he was lording it all by himself. When the master came to him, he rebuked him for having been so mean, for having made the people feel so afraid. And he made the snake feel very bad. And the cobra repented and begged the master's pardon and said that he would never do that again. He would be very nice from then on. So the master said that's very good, and he went away. A few years later he came back and he looked for the cobra and he couldn't find him anywhere. Finally he came across this hole and he called and the cobra crawled out. But he was in terrible shape. He was very weak. His back had been broken. He could barely crawl. He was in great pain. And he hadn't eaten in a long time. And the master said, "What's happened to you?" And he said, "Well, when the boys in the village found out that I was no longer being mean, they began to throw things at me and to chase me and to torment me. And eventually they did all this to me and I had to hide in here." And the master said, "Well, but I never told you not to hiss." The
satsang of the children was very loving. The children gave me a lot of love, and I'm very grateful to Mary for teaching the children to sing the bhajans and making all the arrangements for the satsang. And also I'm grateful to Russell Perkins for telling the story to all of you every day. I hope that like you have kept your children in the discipline so far, you will continue doing so. And also I would like to advise the dear parents to take good care of the children. Material of devotion, their devotion, and who gave us the opportunity to do their devotion. ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮੋਲਕ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The masters have their own duty to perform, and the disciples have their own to perform. Graciously, the masters have given us the capital of the devotion of Naam. Now it is for us, for the disciples, to increase that capital of the wealth of the devotion of Naam, and we can do that by working hard. ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ ਤੇਰੀ ਡਾਢੇ ਕਈ ਪ੍ਰੀਤ। Sufi Saint Farid Sahib says that, "Oh Farid, you wake up and clean your mosque. What kind of love is this, that you are sleeping while your beloved is awake?" ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਮਸੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਜੋ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਉਠੋ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸੀਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ ਦਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੋ, ਉਦਮ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੁਹਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵਲਾਓ। All the saints have said that if there is any true temple, if there is any true mosque or any true abode where God Almighty resides, it is our body, our human body, because God Almighty does not reside anywhere outside. He is residing within us. So that is why he says that all the bad thoughts and the other worldly things which we have in our body, they are like the dirt. So you wake up in the morning and using the broom of the Simran which your masters have graciously given to you, remove all the thoughts, remove all the dirt of this world from your within and make it clean. Just like we clean the temple or the religious, the holy place where we worship God. In the same way, God Almighty is within you and you remove all the worldly thoughts, all the bad things from your within and clean it with the Simran. That beloved who is within you, he is always awake. So you should also wake up early in the morning. If you are not waking up while your beloved is always up, that means that you are not loving him enough. If you still claim to be the lover of God, that is a false claim. Because if you really love him, then like he is awake, you will also get up. So like all the saints have said that our human body is the truest temple and they have given us the broom of the Simran. So using that broom, we should clean our within and we should always remain awake. And if we really love God, like he is always awake, we should also remain awake. Early in the morning, we should get up and clean our within and do our devotion. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਖੂਹ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਬਤ ਜਿੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਨ ਦੇ ਓਲੇ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Kabir Sahib has described this world as a blind well. And he says that we do not have any idea how deep this well is, but taking the lamp of the knowledge from our beloved master, we can remove the darkness of the ignorance. God Almighty is hidden behind a very thin wall of our mind and the egoism. But when we take the lamp of the knowledge from the master, we can easily remove that wall and we can easily see beyond that wall of our mind and egoism that how that Almighty Lord, who is mightier than the biggest mountain, is residing within us. हाँ भाई, रोज दी तरह ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। So like every day, closing your eyes, start your Simran. के अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी। के अपना सतगुरु प्यारा जी, ना कर बंदे मेरी मेरी दमदा की बरवासा।
ਨਾ ਕਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਦਮ ਦਾ ਕੀ ਬਰਵਾਸਾ। जीवन तेरा ऐसे जैसे पानी विच पतासा। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। ना कर बंदे खुदी तकबर सिर पे मौत निमाणी। ना कर बंदे खुदी तकबर सिर पे मौत निमाणी। एक दिन पगले ऐसा वे तू डूबे बिन पानी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी। माटी ओढ़ना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी। एक दिन पगले ऐसा वे माटी में मिल जाना जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही। जब तक तेल दीप में बाती जगमग जगमग हो रही। जल गया तेल निखुट गई बाती लाश सिवियों को तोड़ लई। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। पाटा चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। पाटा चोला हुआ पुराना कब लग सीवे दर्जी। दिल का महरम कोई न मिलया सब मतलब के गर्जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी। अपना कोई नहीं है जी के अपना सतगुरु प्यारा जी।
कहो या राम। बोल प्रेम से गुरु 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 बोल प्रेम से गुरु गुरु। याद किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ाया, सदा दीन को गले किया जब भी भक्तों ने नंगे पैरों दौड़ाया, सदा दीन को गले लगाया, सदा दिया दुर्बल को सहारा। खैर नाम की पाओ कृपाल जी, अजायब रे अबोल प्रेम से। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਵਾਂ ਦੀ, तो घरे उसने काफी तंगी सी, तो शिव प्रगट होए। उसने अर्ज की थी कि घर दे अंदर बड़ियां तकलीफां हन, रोजी रोटी नहीं। उन्होंने खुश होकर उन्होंने घंटी देती, पड़ोस वाले दे ये तू दुगना च रह जाएगा। हुण पहला तो वर ले कि जट जिहड़ा सी बड़ा खुश होया भी घंटी वजादा करें, किसी चीज की लोड़ होगी। जद ये क्या भी तेरे पड़ोस वाले दे दुगना जाएगा, इत्थे आके जट नूं बड़ी समस्या हुई भाई भगती मैं की ते पड़ोसी दे दुगना जाए। वो घर वाली नूं आके उहदे फायदे तो दसे भाई शिवा ने बड़ा अच्छा वार दिता है, पर कहने लगे आ कुछ मेरे जचिया नहीं गा। जरा ये क्या भी पड़ोसी ते दुगना जाए, वो उंगली ना लाया तो अमरीकन तो जानते हैं, एक इत्थे ढूई ते रखिया, क्योंकि साडे हिंदुस्तानियां दे कोले तो ऐसा कोई चीज नहीं हुंदी। इत्थे मोढियां ते ऊं बिठाउंदे आ, इन्हां दे बनया हुंदा पिछे झोला, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਟਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैं देख के हस पिया, मैनू कहंदी आ देख हथ बंधे आ अगे वास्ते ना किते। सो प्यारिया, ये दरबार दे अंदर गुरु कृपाल जैसी जैसी किसी मंग है वैसी